सादर प्रणाम, पादाभिवंदन और यहाँ पे उपस्थित सब महिलाओं को मेरा सादर प्रणाम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। यहाँ पे सब महिलाओं में वो नारी, वो नारायणी उपस्थित है, ये समझ के मैं सबको अभिवंदन करती हूँ। Everybody is saying motherhood, like जो मातृत्व है उसको सिखाना चाहिए। तो अभी ऐसा टाइम आया है कि हम सोचे कि मातृत्व को सिखाएं। मातृत्व तो इनबॉर्न ट्रेट होती है। It's an inborn trait in every girl child. You just see a girl child, just look at the way she nourishes, look at the way she nurtures. Dolls के साथ जब आप बच्चियों को देखते हो, जब वो the way she behaves, it's an inborn trait in a woman. But why? Why is that a woman wants to move away from it and she wants to create a different identity for herself? The reason? What is the reason? Can anybody tell the reason why a woman wants to move away from motherhood or wants to prioritize something else more than motherhood? Why? Because she's not getting the respect she deserves. Do you agree with this? How many of you agree with this? Yes, she doesn't get the respect she deserves. Because सिर्फ आप बच्चों को पालते हो, सिर्फ वही काम करते हो, तो आप हाउस वाइफ हो। तो इसका हाउस वाइफ का शब्द तो कैसे निकालते हैं कि जैसे घर की मक्खी हो, हाउस फ्लाई। वेरी रॉन्ग। शी इज अ होम मेकर। शी आफ्टर ऑल मेक्स अ होम। इट्स द वुमन हु बिल्ड्स द होम। When there is no good home, there is no good society. If you want to bring order into the society, a woman at home, if she nourishes the child in the right way, that child would become a righteous individual. A righteous individual can become a responsible citizen. And only when you have responsible citizens in the society, you can have a great nation. You agree with this? This is nothing but nation building. From where do you get great citizens? अगर जिजिया माँ ना हो तो can you think of Shivaji without माँ जिजिया? Can you think of Swami Vivekananda without Bhuvaneshwari Devi? Look at her thought process. How great she was. उनका एपिक्स के साथ कितना ये था, कितना एपिक्स समझाती थी अपने बच्चों को। इसलिए स्वामी विवेकानंद got interest, inclination towards it. That's why he could become the great Swami Vivekananda, who could teach the rest of the world what India is, what भारत क्या है, भारत के भीतर क्या है, भारत की संस्कृति क्या है। ये समझने के लिए फिर माता को पता होनी चाहिए कि भारत की संस्कृति क्या है। हम तो सिर्फ संस्कृति को रीति रिवाज, कपड़े का पहनने का ढंग से जोड़ते हैं। This is not what you wear, how you do your customs, आप पूजा कैसे करते हैं, सिर्फ rituals ये सिखाते हैं कि ये संस्कृति है। No, this is not. You understand the inner meaning of everything. अभी जब आप त्योहार मनाते हो, जो गणेश चतुर्थी मनाते हो, तो उसमें क्या कथा सुनाई जाती है कि शिव ने कैलाश पर गए थे और जब गणेश उधर उनको जाने नहीं दिए तो उन्होंने उनका सिर काट दिया। ये क्या बात हुई है? शिव तो परमात्मा है। क्या शिव नहीं जानते कि गणेश जो है वो क्या है, कैसे बने हैं? वो नहीं जानेंगे? He is Paramatma. He knows. But the real inner meaning of that story is Ganesh, when he is unaware of Shiva, he is in ignorance. When that ignorance is his head, it is just the depiction of ignorance. When the ignorance is removed and when another head of Gajasura is replaced, he becomes Mahajnani. That's why he is Vigneshwara, Gananayaka, the God of all wisdom. How did he become the God of all wisdom? Because he was replaced with Jnana. The ignorance was removed. That is the real essence of the story. वो हम नहीं समझाते। सिर्फ कथा को कथा समझेंगे तो बच्चे पूछेंगे ना, ये कैसे शिव हुए, ये कैसे भगवान हुए।
क्या इनको इतना गुस्सा है तो मेरे घर में पापा पे गुस्सा करेंगे तो ठीक है, भगवान ही गुस्सा करेंगे तो पापा गुस्सा करेंगे तो उसमें क्या खराबी है, सब गुस्सा कर सकते हैं. Then what essence, what story? You understand the essence of the story. The real essence of the story is गौरी जब स्नान करती है तो छिपके करती है, तो गणेश जी को वहां पे क्यों रखती है कि शिव को आने नहीं देती है. उसका अर्थ है छिपके स्नान करने वाली गौरी अपनी भीतर की पराशक्ति है. ये समझाइए बच्चों को. हमारे भीतर ही शक्ति है. तब तुम शक्ति को तब जानोगे, तब तुम अज्ञान को त्याग करोगे. अज्ञान का त्याग करने का अर्थ है गणेश जी का वो हेड ट्रांसप्लांटेशन जो शिव ने किया था, उसका वो अंतरार्थ है. इसको हमको समझाना है. सिर्फ कथा को सुपरफिशियली समझाओगे तो कौन समझेगा, कौन सोचेगा. आजकल के बच्चों के लिए दे नीड लॉट ऑफ एसेंस, दे रियली नीड द इनर मीनिंग ऑफ इट. सी ऑल द स्टोरीज व्हिच हैव बीन टोल्ड, दे ऑल हैव एन इनर मीनिंग, बट व्हाट हैपेंस इज वी इग्नोर द इनर मीनिंग एंड जस्ट टेल द स्टोरीज लाइक दैट. तो दीपावली क्या मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? तो दीप जलाते हैं, मिठाई बांटते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बस यही दीपावली हुआ है क्या? दीप जलाने का अर्थ क्या है? दीप में 3 रंग होती हैं. वो 3 रंग लक्ष्मी, गौरी और सरस्वती का प्रतिरूप है. लक्ष्मी, गौरी और सरस्वती क्यों इंपॉर्टेंट है? लक्ष्मी इज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, सरस्वती इज विजडम, शक्ति इज द पावर एंड एनर्जी टू डू एनीथिंग इन लाइफ. Without these 3 things, you cannot achieve anything in life. So there are so many beautiful meanings attached to these festivals, this culture, but those things are not just told. अभी गो माता की रक्षा करो, गो माता पवित्र मानी जाती है, बात सही है. तो क्यों पूछते हैं लोग, यहाँ पे तो बहुत सारे जानवर हैं, मगर गो की ही क्यों हम नमस्कार करें, क्यों करें? पूछते हैं ना. We are all like-minded. We all said yes, गौ माता को रक्षा करनी चाहिए, गौ माता का पूजा होनी चाहिए, सब हम सब मानते हैं. मगर बच्चे पूछेंगे क्यों? क्योंकि what is the significance of cow, especially the native breeds of India? What is the significance? Because that is the only animal where the exchange of ozone and oxygen takes place. We really need ozone because it is being depleted. When the ozone layer gets depleted in the stratosphere, we have more UV radiation on this earth. So to protect all this, we need more and more and more cows. That is how it should be told to the children of this country. But we don't do that. How many of you agree with this point? Yes or no? जहाँ पे गौ माता होती है उधर ग्राउंड वाटर लेवल ज्यादा होता है, scientifically proven. But we don't tell them. If we tell, they'll get convinced. But we don't bother to know. Either we are just putting superstitions or just blind rituals without telling the inner essence. The most scientific dharma on this universe, on this planet Earth, is Sanatana Dharma. We have to understand the inner essence of it. When we do not understand it ourselves, what are we going to teach our children? Nothing. I would like to just remember the beautiful words by the greatest president we ever had, Sree APJ Abdul Kalam ji, in the United Nations Assembly. Can you all say it with me? Because I was just reminded of his beautiful words when Mataji was just talking about motherhood and family structure. When there is righteousness in the heart, when there is righteousness in the heart, can you say it with me? When there is righteousness in the heart, there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. viswamangalya sabha सिर्फ एक घर को सीमित नहीं है, विश्व से उसका बहुत लेना देना है.
वो विश्व को अच्छी जगह बनाने का काम है, सिर्फ घर को संभालने का काम नहीं है। तो बहुत बढ़िया काम है। I'm really impressed with the aims of this great organization. Whenever you make a home a better place to live, the world becomes automatically a better place. So why women are drifting away from this is because they don't get the respect they deserve at home. क्योंकि मदरहुड को हम बहुत छोटी नज़र से देख रहे हैं आजकल। ओ करियर बनाना, पैसे कमाने से ही एक स्त्री को रेस्पेक्ट मिलती है। बात सही है या नहीं? A woman, whenever she's educated, she's not working, she's not making money, and she's not respected. See, respect आजकल सिर्फ material position से ही होता है। ये हमारे सोच विचार में ऐसा ये बहुत गहराई से भर गया है। तो हम what is this challenge? ये चुनौती है आज इस जमाने का एक challenge है। तो how do you deal with the challenge? A woman is important. Woman is important for home, but still she also has a personality. She also has some knowledge. She also has some skills which she wants to put into practice. She wants to work. She wants to make money. She wants to have her own identity. But how does she balance both? When she has to balance both, there is something called as a role conflict. She has to become a mother. She has to take care of her children. At the same time, she has to prove herself in her workplace. How does she do that? She has to either give away her responsibilities to someone. If she is lucky, she has great family support, then probably she can manage. If she doesn't have the support, क्या होता है? You give the responsibility to somebody else. If it is somebody responsible, then they can bring up the child in the right way. It doesn't happen. What happens? The child suffers. Mother will suffer with guilt. All these two things are liable to happen. Yes or no? Why? Because women, they don't want to express themselves boldly. उनको सिर्फ हाथ उठाने में भी संकोच होता है कि उठाएं या नहीं उठाएं, बाजू वाले उठाएं कि नहीं हम नहीं उठाएं, पीछे देखें आगे देखें, ये सब सोचते हैं। है ये? Why aren't we expressive? This is a land of expression. Vak Devi, Saraswati, she is expression. Why women are quiet in this country? जो स्त्री हैं उनको जब पढ़ाई मिलती है तो उनको कुछ ना कुछ नौकरी करना चाहिए। अगर नौकरी हो या व्यापार हो, कुछ भी हो, पैसे कमाने का काम करने से ही उनको घर में इज्जत मिलती है। ये बात है या नहीं है? सही है या नहीं है? कुछ लोग सही बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे। सही है। तो इस वजह से क्या होता है, मातृत्व थोड़ा सेकेंडरी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है जो महिला काम करती है तो उसमें मातृत्व का गुण नहीं है, वो सही मदर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरी लेस टाइम। सो इसलिए मुझे बहुत जल्दी इसको परिपूर्ण करना है। फिर भी मुझे इधर आना बहुत आनंद मिला और आप सबके साथ समय बिताने भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बट हम ऐसे ही भाषण दे के चले जाएंगे तो उसमें कुछ मीनिंग नहीं है, मगर सॉल्यूशन भी बात करना चाहिए, सॉल्यूशन डिस्कस करना चाहिए। हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? when you're working, you need to spend time with your children. आप काम करते हो, बाहर जाते हो, मगर जो समय आप घर में बिताते हो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी होनी चाहिए मतलब जितना ज़्यादा बिताओगे उतना अच्छा नहीं है, जितना कम भी बिताओगे मगर उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। तब क्वालिटी होगा, then you will discuss things, you will discuss the day with your children, you will discuss your plans with your children, only then you will be able to influence your children. If you don't bother to give them the time, who will they share with? Their friends are just like them, the same mindset. मगर आपको बच्चों को समय जो भी देते हो वो कम हो या ज़्यादा हो, उसमें क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और सब विषयों के बारे में आपको जानकारी भी रखना चाहिए। यही नहीं कि सिर्फ सीरियल देखें, उसमें सास बहू की लड़ाई के सीरियल देखें
नहीं तो जस्ट एड्स में आपको जस्ट परमित रखे, ऐसा नहीं है. नो अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री, नो व्हाट्स हैपनिंग इन अराउंड द वर्ल्ड. इम्प्रूव योर नॉलेज. आपको आपकी नॉलेज बढ़ानी चाहिए. कितने लोग यहाँ पे अखबार पढ़ते हैं रोज? वेरी फ्यू. ओके. कितने लोग डिस्कस करते हैं घर में जो करंट अफेयर्स है वो सब? ओनली मेन, राइट? वुमेन डोंट डिस्कस, वुमेन डोंट टॉक करंट अफेयर्स. डू दे जस्ट टॉक अबाउट आजकल आज क्या सीरियल है, कल क्या आएगा एपिसोड? इज दिस द टॉपिक ऑफ डिस्कशन? होपफुली नो, राइट? So, I would like to conclude my speech and my sincere gratitude to Viswamangalya Sabha for having me over here. Thank you very much.